हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई हुई है। इसने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धमाल मचा रखा है। हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की गई थी। नतीजा ये रहा कि इसने कमाई के मामले में प्रभास और एस राजमौली की फिल्म बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। दरअसल फिल्म की कहानी के साथ साथ एक्टिंग, डायलॉग्स और इसके गाने सब कुछ हिट है। साउथ इंडस्ट्री की सबसे पसंद की जाने वाली फिल्मों की लिस्ट में इसने टॉप पर अपनी जगह बनाई और यही वजह है कि इसने छठे हफ्ते में बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म ने अपने छठे हफ्ते में 6 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 ने छठे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर 5.38 करोड़ की कमाई की थी। इसी के साथ साफ हो गया कि बाहुबली 2 को भी पुष्पा ने मात दे दी है। बता दें, पुष्पा का क्रेज लोगों पर इस कदर चढ़ा हुआ है कि फिल्म के गानों पर आए दिन रील्स बनाई जा रही हैं। समांथा के गाने ओ अंटावा हो या फिर रश्मिका मंदाना का सामी सामी या फिर अल्लू अर्जुन का गाना श्रीवल्ली, क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड तक सभी इन गानों पर थिरकते हुए दिख रही हैं। अल्लू अर्जुन की ये फिल्म जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। इस फिल्म ने अब तक कई बड़ी फिल्मों को मात दे दी है। साल 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने का खिताब भी इस फिल्म के नाम ही हुआ है, जिसने बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों को भी धूल चटा दी है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह फिल्म थिएटर्स में तो कमाई कर ही रही है, दूसरी तरफ इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोस पर भी रिलीज किया जा चुका है। थिएटर्स के साथ साथ ओटीटी पर भी फिल्म का जलवा बरकरार है। वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 350 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली है। बता दें, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना दिखाई दी हैं, जिन्होंने अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीता है। इस फिल्म के जरिए पहली बार अल्लू अर्जुन और रश्मिका की जोड़ी दर्शकों को देखने को मिली, जिसे काफी पसंद भी किया गया। फिल्म का पहला पार्ट दर्शकों को इतना पसंद आया कि अब दर्शक इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये क्रेज लोगों में साफ तौर पर देखा जा रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना क्रेज तो लोगों में KGF 2 को देखने का है और वैसा ही अब पुष्पा के साथ भी हो रहा है। खबरों की माने तो पुष्पा 2 द रूल अप्रैल 2022 से शुरू हो सकती है। फिल्म के दूसरे पार्ट में दर्शकों को अल्लू अर्जुन और फहाद फासिल के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। Today, Wikipedia says Allu Arjun is an Indian actor who primarily works in a particular industry, or Rashmika Mandana is an Indian actress who primarily works. I think there is an insane amount of respect and appreciation for all kinds of films. I have seen that, from the time I have been here, I've seen that we have welcomed all kinds of movies. And I'm not saying about us, I'm talking about the Indian audience. While I speak to you, there's a friend who's an RJ in Punjab who told me that, listen, please tell them that we are excited to watch the movie. I have a 9-year-old niece who told me when Siti Ma released that, it's Allu versus Sallu. I said, how did you know? So these are things, when you say that am I really, do really people love me that much? There is an insane amount of love maybe which you will get to see with this film. I want to know, do you see the changing shifts in the industries and the respect that is given to each other? Let her speak, then I'll speak. Yeah, both of you. I think there is an extreme, as in the last decade, I think we've seen such a shift in our cinema, in our field. I've just entered the industry in 4 years, but I've seen so much happening before I entered, and when I'm a part of Indian cinema now, and I can't be proud of it. I couldn't have entered a better time. I think this is the perfect time that I'm in the industry, because I see, like you said, the languages are, merging together. We're having pan-India releases. It's going to be, like Sir said, Indian films rather than South India film or, a Bollywood film. It's not going to do that anymore. In a couple of years, I think it's just going to be Indian cinema. Yeah. Probably we're going to go globally, dubbing our film in their languages. So we just need to see the reach. I think we should always experiment with that. But I think it's fascinating, and it's super, it's amazing to see all people just appreciate content now. People just want good content.
people want good filmmaking, and when you give it, people appreciate it and they make it their own. Absolutely. It's a very interesting. What's your name? Sorry. Nayandeep. Nayandeep. How old are you? I'm 29. You're very mature for your age. I appreciate it. It's a very wonderful question that you asked, by the way. You should see cinema, how it's running, how the trends have been running in the last 10 years. Like I'm saying in the 2000s, it's a very clear back between the South cinema and North cinema. Let's be honest about it. And then if you see the entire 2010s, the bridges, there have been beautiful bridges, thanks to people like Manish ji, who have bridged those gaps. And now everybody's getting familiar with each other's cinema. And I'm telling you, from the next decade onwards, from the 2020s, the lines will be so blurry that it will not matter where it comes from. It is only the content that will matter. There will not be South actors, North actors. It will all be about Indian cinema growing. And I'm telling you, with the wonderful platforms that have opened like OTTs, there's so many set of new filmmakers, directors, actors, technicians. This has opened up amazing horizons for us in entertainment industry. And we as Indian entertainment industry, not just cinema, we as Indian entertainment industry are going to be a very huge, or probably the biggest players in the next decade. And I'm very positive as a country we will go up. Absolutely. Thank you. Absolutely. We'll Rashmika, take one last question. Yeah. I also had one question for Yeah, I'll Rashmika. come. Small Sorry, one. sorry. Yeah, come. So Rashmika, your movies, Hindi movies are also releasing, and there is a pan-India approach to all the films that you've done, whether it's a Geeta Govindam also and Dear Comrade, which people have watched. How do you see, I have met people who are from South, now that we are meeting quite often. There's a sense of warmth, and there's a sense of imagery on screen. And it's very different, How do you see those two worlds mixing when you do films like these? As in, I think for us, for me, I can speak only for myself, and for me, as much of fame and the glamour there is out there, for me, it's me doing good work and good content, and me doing the best I can in a film that I'm a part of.